दिन के 3-4 खजूर अभी भी खाती हूँ. ऑलिव ऑयल बहुत पिया. मेरी एक सर्जरी मार्च में हुई. आई डेवलप्ड अ कॉम्प्लिकेशन एंड 1 महीने बाद मेरी फिर से सर्जरी हुई. इनफैक्ट द फर्स्ट टाइम आई वाज मोलेस्टेड आई वाज 3 years old. If I don't become a mother now, तो बाद में कौन मेरा ख्याल रखेगा? After my surgery, my doctor said कि आप बस लगातार कैल्शियम, विटामिन C और D3 की supplementation. There was a truck in front of us. वो आ गया सामने, यहाँ से आ रहा था, हम बहुत तेज थे, यहाँ से एक ट्रक लगा. I started connecting with my creator a lot. I would like to mention here that Islam में जो way of life बताया गया है कुरान में, it is so on point. Now the entire Western world is moving towards that. Assalamu alaikum, this is Aamna, you're watching AHI and this is AHI Inner Star powered by CaC-1000 Plus. It's a show that is meant to talk about physical health, about mental and emotional well-being. It's about talking about financial literacy. And ये जो series of podcasts है, इसका मकसद ये है that we help women empower themselves on how to become so strong by the time they're in midlife that, you know, the rest of their life is they're completely in control. And it's about all of these things. And all of my guests are superb and they're fantastic women in their 20s, in their 30s, in their 40s. We've got women in their 50s who are in control of their lives. And I have with me today Ayesha Omar. And Ayesha, we will be talking about everything but work. Oh, I'm so happy and grateful to be here. No, thank you, because you have been so inspirational with your personal journey and the kind of grit that you have dealing with accidents and adversity and, you know, everything that a woman goes through, but women don't talk about. No. And somewhere in our 40s, we realize that, yeah, अच्छा आधी जिंदगी तो गुजर गई है, तो हमने ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया. And I can say this for myself. And then I hit 50 this year and I was like, oh God, now I need to get my physical health in better control. I need to get my weight in better control. I need to get my finances in better control. Everything hits you. Absolutely. It does. So I'm hoping that today you will help me motivate women on how to be in control of primarily, I mean, nutrition and how important that is. You have been an advocate. And I've seen you turn your lifestyle around. You weren't always this particular about it. No. But, you know, this is also my purpose in life, to inspire other women. Yeah. I mean, all humans, all genders, but especially women, because I'm a woman. Yeah. And because women in Pakistan, I feel, क्योंकि वो घर से कम बाहर निकलती हैं, smaller percentage, although women are way smarter, I'm sure a lot of men will get offended by this. No, they are. But I feel that women are absolutely smarter. Totally. It's just that men would have made us believe. Men are stronger, physically stronger. Sure. You know, जो है वो है. Of course, exceptions. I mean, there are all kinds of smart men all over the world. And all kinds of super strong women as well. Yeah, that's true. That's true. Exceptions to hai. But coming back to your question, that I wasn't always like this. Yeah. I think I have my brother to thank for this. Okay. मेरे भाई जो हैं वो एक बहुत ही कमाल के इंसान हैं और वो मुझसे बिल्कुल एक टाइम था जब हम पोलर ऑपोजिट्स थे बट अब वो गैप कम होता जा रहा है हम सिमिलर होते जा रहे हैं एंड माय फैमिली इज़ अ वेरी स्मॉल यूनिट मेरी अम्मी हैं एंड माय फादर डाइड व्हेन आई वाज 1.5 नॉट इवन 1.5 1 साल की थी और अम्मी सिंगल पेरेंट हैं रह चुकी हैं तो मैं मेरा भाई और मेरी अम्मी एंड माय मदर हैड अ रियली टफ लाइफ तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इतना ट्रॉमा और स्ट्रेस देखा कि उनको बहुत किस्म की एलिमेंट्स और डिजीजेस हुए विल कम टू दैट लेटर हाउ स्ट्रेस एंड ट्रॉमा लीड्स टू autoimmune disorders and inflammation in your body. तो उनको एक बहुत ही खतरनाक ऑटोइम्यून कंडीशन हो गई एंड द डॉक्टर सेड दैट इनको तो पूरी जिंदगी या तो स्टेरॉइड्स पे रहना होगा यू नो इट वाज लाइफ थ्रेटनिंग एंड दैट मींस लाइक सो मेनी फेलियर्स विद इन योर ऑर्गन्स एंड स्टेरॉइड्स आई मीन दैट वाज वन ऑफ द थिंग्स शी हैड अदर ऑस्टियोपोरोसिस अर्ली ऑनसेट सो देन माय ब्रदर वो फिजिक्स पढ़ रहे थे ओके उन्होंने अपनी
path को change किया. Okay. And he started studying, he got more into like nutrition and That's amazing. yeah, and more into an alternative way of living. Okay. How to heal yourself through foods. तो वो एक holistic healer type बन गए. Okay. और उन्होंने बहुत research की, बहुत पढ़ा. Right. और उन्होंने मेरी अम्मी के autoimmune disorder को reverse करना शुरू किया. Amazing. 2 साल. Yeah. You know, he just dived into it and he went into the depths of it कि क्यों होता है, causes क्या होते हैं, क्योंकि symptoms को तो आप suppress कर सकते हैं, but you have to get down to the root cause of everything. Yeah. And it's all connected to food. Everything. Yeah, Obviously, आपका खाना is Absolutely. your fuel. Yeah. It's like गाड़ी चलती है पेट्रोल पे, बुरा पेट्रोल डालोगे तो जिस्म भाई जलता है खाने पे. Yeah. And for a lot of people, food is the last priority. You know, Yeah. the other things are bigger priorities, and nutrition is the last priority. Yeah. So I was the black sheep of the family. उस वक्त, you know, I was drinking sodas and I was eating processed foods and junk. Literally, when I was growing up, मैं 1.5 लीटर की सोडा की बोतल खुद पी लेती आराम से एक दिन में. You know, फिर मैं छुप के पीती थी. जब मेरी when my brother and my mother started becoming really healthy, तो my brother would be like, you need to stop doing this, you need to stop doing this, and I was like, oh, okay. Yeah. So and then, how old were you at that time? I think college के बाद maybe in my 20s. बच्चों को कहो कि सोडास मत पियो, जंक फूड मत खाओ, तो वो बड़ी उनको तकलीफ होती है. मैं तो बचपन तो मेरा समोसों और सोडास पे गुजरा और कैंडीज पे, और लंच में हमें वो मलाई और चीनी वाले सैंडविच मिलते थे. That sounds healthy. No, it is the most unhealthiest thing to have. Come on, malai is no, not good. Malai is great. अगर दूध में hormones ना हो और true. दूध की source अच्छी हो तो मलाई is great. हाँ. But अब रोज तो नहीं आप मलाई खा सकते. नहीं. और इस पे भी हम आएंगे dairy and white sugar ऊपर. हाँ, वो टाइम था जब सफेद डबल रोटी पे मलाई और चीनी. सफेद डबल रोटी पे सफेद मलाई और सफेद चीनी. Okay, अच्छा, and then my mother used to make me, वो बेचारी single parent सुबह उठ के उन्होंने लंच बनाना कि बच्ची मेरी टग शॉप से चीजें ना ले, तो पराठा और अंडे का भी टाइम होता था. अच्छा, वो अच्छा नहीं लगता था, तो वो मैं जाके फ्रेंड्स को दे देती थी, वो मैं खाती नहीं थी, although that's a really healthy breakfast. घर का बना हुआ पराठा अंडा is really healthy. Paratha roll is fantastic. वो खाने को दिल नहीं चाहता था. So I used to buy samosas and sodas and you know, जो बच्चे करते. Then in my 20s also I was not very healthy. I think late 20s में आके is when my mother was very sick. I saw my mother really miserable for many years. Yeah. You know, इतनी तकलीफ में वो होती थी. She used to be itching and swollen and always in pain. So then my brother started changing her diet. And उन्होंने 2 साल सिर्फ boiled vegetables खाई. Sirf, because everything was a flare up for her. Everything was causing inflammation. अच्छा, ये कहने को छोटी बात है कि 2 साल boiled vegetables, but that is like बंदा 2 दिन नहीं खा सके. उनका पूरा immune system collapse हो गया. Stress was a big cause. So much pain, so much trauma. I feel that a lot of things in life are triggered by stress. I mean, everything, yeah. Everything. And stress manifests in different ways in different people. Some people it attacks, for women I see this, attacks the skin. Yeah. For some people it attacks the hair and the skin. Some people, you know, your entire gynecology, it attacks the uterus and the ovaries. And diabetes, everything. It attacks the gastrointestinal, absolutely. Yeah. It's because stress को combat करने के लिए हमारी body एक hormone release करती है. It's called cortisol. And cortisol is also good in small doses. You know, it's like your fight and flight hormone. Yeah. आपको कोई शेर अटैक कर रहा है, तो मतलब this is how our ancestors were dealing with stress. कि उस ज़माने में तो ये actual physical threats से deal करना था body ने. So it propels your body to take action. But if cortisol is being released all the time, then आपका immune system malfunction रहता है. So अब ये meditation और yoga और you know, Islam में नमाज, so it's all to balance and calm you down.
you know. हम एक zen mode में जा चुके हैं यहाँ. हाँ, और होना भी चाहिए. Absolutely. With our high stress lives. I think that energy is so important to surround by good energy and to maintain that balance when you need to detox mentally, emotionally, physically, all of that. You know, Aamna, it's really funny कि मुझे लगता था कि आप zen और comfortable तभी हो सकते हैं जब आपके इर्द गिर्द अच्छी energy हो और zen energy हो, but you can't control that. You can't. You can't isolate yourself. आप बाहर में तो नहीं जाके बैठ सकते कि मैंने किसी से नहीं मिलना, मैंने अकेले रहना है. You have to work. या एक कमरे में दाखिल हो कि आप चले जाए, आप लोग चले जाए. आपकी एनर्जी बुरी है, आपकी एनर्जी बुरी है, Please leave. ऐसे तो नहीं हो सकता. So you have to figure out how to make your body and your internal system not be triggered by external circumstances. So it's all about building the strength within, right? Resilience. Yeah. Just building your strength within and then being able to deal with everything. Yeah. But you know, like external circumstances are really chaotic. What do you do? Yeah. How do you calm yourself down? And I learned that the hard way. You know, I've been through really, really traumatic times in my life. Yeah. और मैं बहुत stress, anxiety और trauma से गुजर चुकी हूँ. So मैंने late सीखा ये. Tell me, Ayesha, you lost your father very young, and you probably have no memory and no recollection of him. Zero. But when you were growing up, did you feel the absence of a father figure in your life, or did you feel that your life was complete the way it was and यही normal है? Of course, I felt like यही normal है, but the absence was felt because my mother was a father and a mother. Yeah. तो वो सिर्फ माँ की जो functions या actions होते हैं वो सिर्फ उन पे focus नहीं कर सकती थी. Yeah. She had to balance both. So of course growing up I would be like it's so unfair कि मेरी सारी friends when I was a kid उस वक्त तो you know की sensibility इतनी ज़्यादा नहीं होती. Yeah. And I was like, why don't I have a father to take care of things? You know, my mother was always stressed. Financial difficulties, first 15 years of our life financially बहुत मुश्किल थे. You know, we didn't have financial help from any side of the family. Yeah. My mother was struggling and trying to make ends meet. But I was grateful कि मुझे education अच्छी इसलिए मिल गई because I got a scholarship. Yeah. Very, very, very grateful कि मुझे grammar school में compassionate grounds पे scholarship मिल गई. Right. So at least my mother's dream of giving me and my brother a good education वो fulfill हो गई. अब education मिल रही है but rent, खाना, पीना and growing up I guess we did not have the highest quality foods in our household, but basic चीजें थी. You know, शायद हमें देसी मुर्गियाँ नहीं मिल रही थी उस तरह. But yeah, of course I used to feel कि अब्बू नहीं है, एक constant डर था अम्मी को. So I grew up with a sense of fear always. Right. कि हमारा दुनिया में कोई नहीं है. अच्छा, and I'm actively trying to change that. कि वो जो एक डर है ना कि it's us against the world और दुनिया में कोई नहीं है, ओ भाई मतलब कि आपको चाहिए कोई नहीं. When you have faith, when you are connected to your creator, you are protected. तो ये जो fear होता है ना कि दुनिया में कोई नहीं है, of course it's actively there. You need family support, you need a you know एक बाप का नाम आपसे attached है, एक father figure to fall back on. But वो fear अब मैंने बहुत कम किया है because I have myself, you know, and I've come a long way to get to that. Absolutely, absolutely. And that's really interesting that you say so, because I feel that even in later years, women, they face the fear of loneliness, and especially women who are unmarried, and especially women who are divorced or separated or widowed, and you know, as you age, children have flown the nest and they're not around anymore, या जिनके नहीं हैं. There is that fear कि अच्छा भाई अब आगे जाके अकेले रह जाएंगे, उसका क्या होगा, बुढ़ापे में कौन ख्याल रखेगा, बुढ़ापे में कौन ख्याल, कौन, who is your companion for older age? You yourself. Do you ever ask yourself that question? Of course. Yeah. Different phases आते हैं in your life where sometimes you feel very
scared and fearful. Sometimes you feel, बल्कि एक दिन में ही 5-6 different moods आ जाते हैं. Yeah. You're feeling scared, then you're feeling fine. Yeah. You're feeling overwhelmed, you're nervous. So yeah, there are times when I'm like, oh my God, अगर मैंने अभी, if I don't become a mother now, तो बाद में मेरे बच्चे फिर जो बड़े मतलब कि कौन मेरा ख्याल रखेगा when I'm older. But I think I have a lot more faith now, and I know that everything will happen in its time. What you sow, you shall reap. Yeah. जो energy मैंने अपने अंदर बनाई है, accumulate की है, उसी कि I would say reciprocation में मुझे energy मिलेगी. Yeah. I really believe in the law of attraction. I really believe in manifestations. बिल्कुल. I really believe कि आप जो visualize करेंगे, imagine करेंगे, वो reality बनता है आपकी. Yeah. We are the co-creators. You know, I mean, of course, I believe in destiny. कि आपकी जो किस्मत में है वो है, वो आपको मिलेगा. Nobody can keep that away from you. But अपनी मदद आप भी करनी है. बिल्कुल. So it's a balance between both. So are you going with the flow now, or do you keep like checklist कि अब, you know, 30 पे ये करना है, 40 पे ये करना है, 50 पे ये करना है? I've never kept a checklist ever in my life. And I think that people who do are very successful people also. Also इसलिए add कर रही हूँ because I mean दिखने को तो I think I should call myself successful. Absolutely. But for me, success is not monetary. कि आपने कितनी चीज़ें accumulate कर ली हैं, या कितना पैसा कमा लिया है, या कितनी projects कर लिए हैं, वो भी है success. But I think success is how happy you are in life. Yeah. You know, how peaceful you are in life, how many loving relationships you have in your life. So I feel very blessed. You know, I'm at this point in my life, emotionally in the best place. Yeah. I'm probably the happiest I've been. You know? Although you have been through a grueling surgery, I was like, oh my God, how did you do this? How did you pull this off? And this was an accident that happened 8 years ago. 8 years ago, Aamna. Now, just take me through that accident again, because not many people know how life-threatening it was. Yeah. You were going from Karachi to Hyderabad for a shoot, right? जो हाईवे है, सुपर हाईवे, कराची टू हैदराबाद वाली. अच्छा, वो शायद अब बेहतर बन गई हो रोड. और ये 2016 की बात है. 15 की बात है. 2015 की बात है. मेरी पहली फिल्म कराची से लाहौर रिलीज हुई थी अगस्त में, and I was flying high. I was at the peak, you know. Bulbule was at its peak. My film of a Tutti Frutti गाना आया था. Tutti Frutti, yeah. And I was like, तो of course I feel कि नजर तो लगी. I believe in that. Yeah. मतलब I believe कि आपको external energies affect करती हैं. नजर तो बहुत है. बिल्कुल. Yeah, absolutely. So this happened in December. असफर रहमान मेरे बहुत अच्छे दोस्त, मेरे कॉलीग हैं, उनके साथ मैं जा रही थी. और फॉर द फर्स्ट टाइम मैं अपनी आई ऑलवेज कम इन माई कार विद माई ड्राइवर. जब से मैंने कराची आके अपनी गाड़ी खरीदी, आहिस्ता आहिस्ता पहली गाड़ी खरीदी, फिर ड्राइवर रखा. आई स्टिल डोंट ड्राइव, बाय द वे. आई डोंट नो हाउ टू ड्राइव. You don't know how to drive. ये बड़ी empowered woman. That's okay. Independent. That's okay. But I don't drive. So I told my driver कि अच्छा, me and Asfar, we haven't caught up in a while. 3 घंटे की ड्राइव है. तो मैंने अपनी गाड़ी ड्राइवर को असफर के घर पार्क करवाया. असफर की गाड़ी में शिफ्ट हुई उनके ड्राइवर के साथ, और मैंने कहा चलो हम चलते हैं टू हैदराबाद. And it was the launch of store. कपड़े नाम था. हाँ, और अनुषे भी जा रही थी. And I was in Asfar's car, and Asfar had a driver who was driving fast. And मैंने उनको रोका भी था. But मेरी gut instinct एक बहुत strong intuitive आवाज़ है मेरी अंदर की, जिसको मैं पूरी जिंदगी दबाती रही. And I guess you grow up not having faith in your own decisions, and it all comes from childhood traumas. Not feeling like you're worthy, not feeling good enough, not thinking कि आपकी आवाज़ matter करती है, आप important नहीं है, आपको कुछ नहीं पता. You don't know anything. So I never had faith in my own decisions and my own voice. So I was like, oh, ये मेरा वहम है, मेरा fear है.
But when we got onto the highway, I had a vision कि accident होगा. Really? And I need to tell this guy to drive slowly. He was driving very fast. And did you? I did, multiple times. And he never listened. And he was laughing and he was saying, बाजी मेरा तो रोज का आना जाना है तो मैं तो मुझे पता है आप फिक्र ना करें. अच्छा मैंने कहा ठीक है. लेकिन मेरी जो गलती मेरी थी वो ये थी कि मैंने पीछे I was sitting at the back and I was not wearing a seat belt. Right. Seat belts are there for a reason. Yeah. और अगर मैंने seat belt पहनी होती तो शायद मेरी एक भी इंजरी ना होती. Yeah. It only happened, all my injuries happened because I wasn't wearing a seat belt. Right. So बहुत speed पे accident हुआ. एक broken patch था road में. There was a truck in front of us. वो आ गया सामने, यहाँ से आ रहा था, हम बहुत तेज थे. So इसने swerve करने की कोशिश की, यहाँ से एक truck लगा. So we were sandwiched between two trucks. And there were no, it's not like the Punjab motorway. Yeah. I have to say it that whatever it is, roads in Punjab are so much better. Yeah. You know, ये accident, मतलब motorway पे भी बहुत accidents होते हैं, वो और reasons होते हैं. But the road was very bad. It was broken. And आमना उस साल उसी जगह पे 11 accidents हो चुके थे. December है ना? 12 months के अंदर 11 accidents had happened in that spot. And nobody had done anything about it. No. Amazing. And do you remember that there was an actor, female actor, उनका एक accident हुआ था highway पे and she died, husband and wife थे. You know, नए younger actors. Sana, I think her name was. So I was told by someone later that आपका भी accident उसी spot पे हुआ था and she died on the spot. And you know there must be some, you're protected and you're blessed कि you survived it. Yeah. So well that accident happened and when the accident happened I thought I was going to die. Yeah. And वो जो एक flash होता है सब कुछ उन चंद seconds में recollection होती है उस I was like or did you अभी black तो out? मेरी शादी भी नहीं हुई, अभी तो मेरे बच्चे भी नहीं First हुए, thought के में अभी तो ये भी नहीं हुआ, what will happen to my mother? In those 5 seconds all those thoughts came. Then the accident happened and I'm holding my breath so tightly और वो उस level की tightness जो मैंने अपने अंदर की वो आज तक मेरी बॉडी में वो टाइटनेस है. You must have heard of the sentence, the body keeps score. Yeah. The body remembers all your emotions and feelings. Yeah. And you have to release them. That's such an important message that the body remembers. Keeps it remembers. So that tightness I still feel. Abhi bhi when I'm in a car and somebody's driving fast or कोई truck से गिर होते हैं, I feel the same panic. Right. I am actively working on that PTSD as well. Right. So अब वो accident हुआ and I realized that I'm not dead. But I was in so much pain because मेरी collarbone टूटी, मेरी shoulder blade was fractured from 3-4 places. So I actually thought कि मेरी कोई ribs टूट गई हैं and they're poking into my lungs. Because I couldn't breathe. You couldn't breathe. So I thought मुझे heart attack भी हो रहा है, मेरे lungs भी puncture हो गए. But what I was actually having was a panic attack along with all the physical injuries. Yeah. So the panic attack became worse when I realized that we are in the middle of nowhere. Eventually कोई police की एक गाड़ी रुकी. And they kind of helped me out. फिर मुझे पुलिस की डाले में आगे डाला. There was a police वाला. I have a vision कि वो एक drive कर रहे हैं. Some police guy. Asfar was at the back with more police people. And I was just howling. And I was falling because I couldn't breathe. Yeah. और मैं उनको बस यही कह रही थी कि मुझे सांस नहीं आ रही, मुझे सांस नहीं आ रही. अब मुझे I felt like heart attack है. और वो जो पुलिस वाले थे बस वो मुझे कह रहे थे कि आप बस कलमा पढ़ें. अब वो कह रहे हैं कलमा पढ़ें और मुझे लग रहा है मैं मरने वाली हूँ तो वो कह रहे हैं कलमा पढ़ लें. I'm like मैं भी वही सोच रही हूँ ठीक है कलमा पढ़ें. Oh my God, अच्छा बस कलमा ही पढ़ना है. कलमा ही पढ़ा बहुत देर के लिए, कलमा ही पढ़ते रहे. And that it gave me so much strength. फिर eventually I got to कोई dispensary पे मुझे लेके गए, फिर कोई बस बहुत कुछ हुआ. And I'm also thinking, look how poor our emergency services are. There was nothing. There was no ambulance. On a highway that has experienced similar accidents. Nothing.
Oh, wow. एक डिस्पेंसरी में गए जामशोरों में जहाँ पे कुछ नहीं था. They didn't even have painkillers. They had no medication. Amazing. तो एक डॉक्टर आए, कोई यंग सा, कोई किसी गांव से, उनको पता चला कि खूबसूरत जो है राइट वो आई हुई है डिस्पेंसरी में, क्योंकि ये बात फैलनी शुरू हो गई. पीपल कुड सी माई फेस. सो आई वॉज ब्रॉट इन टू दिस प्लेस एंड बहुत सारे लोग आ रहे हैं, गांव के लोग आ रहे हैं, वो देख रहे हैं मुझे. तो एक डॉक्टर 1 घंटे बाद कहीं से आया, यंग डॉक्टर, और उसने कहा कि मुझे लगता है कि आपकी एल्बो भी टूट गई है, क्योंकि यहाँ सारा कुछ बहुत पेन था. सो ही पुट मी इन अ कास्ट. यहाँ पे पूरे बाजू को कास्ट में डाल दिया. Isn't that like the worst thing to It do? was the worst thing. Yeah. Because Even I know that and I have absolutely no medical experience. मुझे प्लास्टर की कास्ट में डाल दिया. तो अब मैं कास्ट में हूँ and we're waiting for an ambulance to take me back to Karachi. There was no ambulance. There were no phone signals. And I remember किसी ना किसी तरह असफर ने किसी का फ़ोन लेके, किसी एक पुलिस वाले के पास कोई ऐसा नंबर था जिस पर सिग्नल आ रहे थे, तो कोई चीपा की एम्बुलेंस आई या पता नहीं कोई वैन आई, एम्बुलेंस भी नहीं थी. एंड इट केम आफ्टर 3 hours. अब 3 घंटे में वहाँ हूँ विद नो पेन किलर्स, नथिंग. And then it took us 4 hours to get to Karachi. Back to Karachi. South City पहुंची. अब मैंने हॉस्पिटल का नाम ले लिया. ठीक है. हाँ, so then I was there. अच्छा, जो ऑर्थोपेडिक सर्जन्स जिन्होंने मुझे चेक किया, 2-3 ओपिनियंस ली. एंड डॉक्टर शाह, डॉक्टर इमरान शाह, जिन्होंने अब मेरी सर्जरी की है, उनके पास उनका सिर्फ मैं नाम लूँगी, बाकी सर्जन्स का नहीं लूँगी. सो 2-3 ओपिनियंस ली. दूसरे तीसरे दिन एक्सरेज हुए, पता चला कि कहाँ कहाँ से इंजरीज हैं. सो यू नो, मोस्ट कॉलरबोन्स हील ऑन देयर ओन, राइट, एंड मोस्ट स्कैपुला की इंजरीज हील ऑन देयर ओन. तो उन्होंने कहा कि हम देखते हैं, वेट करते हैं कि ये नेचुरली हील हो जाए. वील पुट यू. पहले तो उन्होंने वो कास्ट तोड़ी. हाय, जब वो प्लास्टर तोड़ रहे थे तो इतना पेन हुआ बिकॉज सारी हड्डियां अंदर टूटी हुई हैं. सो दे हैड टू ब्रेक द प्लास्टर. And I remember Maria was there and some other friends were there. I was with somebody in a relationship with someone at that time. He was there and I was just holding their hands and screaming because no painkiller was working. I mean, yeah, after 7 hours of impact. So, I was in a cast, in a sling for a few months. लेकिन तीसरे दिन I went to get Dr. Shah's opinion. When he saw the x-rays, he said कि ये तो हड्डी नहीं जुड़ेगी कभी, आपको सर्जरी करानी है. अच्छा. ये नेचुरली नहीं जुड़ेगी. ओके. तो I was like really? He's like हाँ, आप लिख लें, ये कभी नहीं जुड़ेगी, गैप बहुत ज़्यादा है. Okay. So I went back to the other surgeons. My mother was in Lahore. Because you were avoiding the surgery. Yeah, my mother was like, नहीं कराओ surgery. She was very sick. She couldn't travel to Karachi at that time. Right. So मैंने नहीं कराई surgery उस वक्त. मैंने कहा शायद miraculously I am protected. You know, मेरी जान बच गई, शायद मेरी हड्डी भी जुड़ जाएगी. हड्डी भी खुद ही जुड़ जाएगी. नहीं जुड़ी. Yeah. Because they put me in the wrong sling. Yeah. So negligence. There are 2-3 different kinds of slings that you can be in. Anyways, मैंने बहुत बोल दिया है सबके बारे में. I'm sure everybody wants to hear the story. हाँ, you know, the takeaways from this is. पहला takeaway ये कि you have to listen to your gut. My gut said एक तो आप अपने ड्राइवर के साथ जाएं. जी. दूसरी दफा my gut said कि ये जो sling मुझे लगा रहे हैं आप, shoulder sling, उससे gap और बढ़ जाएगा. Okay. I said मुझे figure 8 brace लगा के दें, जिससे bones करीब होती हैं और वो जुड़ जाएंगी. तो the orthopedic surgeon at another hospital and a really big name, he said नहीं अब नहीं वो कोई लगाता. जबकि when I did research years later, that is the sling I should have had. Right. और 2 हफ्ते के अंदर मेरी bone जुड़ जाती. Fresh break होती है ना. 72 hours में bones को touch करके calcify होना होता है. Look at you, you've done all your research. Dr. Shah says, you're now you Dr. can start Ayesha working Omar. with me now. You are, तुम एक orthopedic you are a bona fide, you are a bona fide orthopedic surgeon, absolutely. So then I waited and I waited. 6 months गुजरे and नहीं जुड़ी हड्डी. And I went back to Dr. Shah and he said, मैंने तो तुम्हें बोला था. And the other surgeons also said कि अच्छा अब आप सर्जरी करा लें. तो मैंने कहा कि यार अब मैं 3 महीने घर बैठ के निकली हूँ. So I said अच्छा
सोचते हैं वो सोचती रही I went back to life. I started working. And very few people knew that my bone was still broken. I used to speak about it. So my bone was broken, my scapula was out of place, my scapula was injured from places, and I kept working like that. Was that good or bad? Of course it was bad, because there were alignment issues. I used to go to the gym. Funnily enough, and fortunately, I looked very fit. You know, last 8 years. Absolutely. In fact, I think the last 3 years, my body looked the fittest it had ever looked. You know, because I was eating right, which brings us to diet. I'm delighted to have partnered with CaC-1000 Plus for AHI Inner Star. It's a brand that I trust personally. I've been using it for years for energy, bone strength, and vitality. The really cool thing is that it comes in several great flavors, orange and mango being my absolute favorite, also because mango comes in a sugar-free option. We all need calcium for core strength. And the great thing about CaC-1000 Plus is that it is affordable and accessible for everyone. Which brings us to diet, absolutely. And I want to know that, of course, because you were eating right, therefore your body ne saath nahi choda. It was prepared, you know, to deal with trauma. I couldn't work out as much as other people. Right. Work out, मैं push-ups नहीं कर सकती थी, मैं burpees नहीं कर सकती थी, मैं ऊपर weights नहीं कर. The many things I couldn't do. Right. But I knew what I could do. Whatever you could do, you did. So I kept on doing it, and I kept on eating healthy. Ajay, now what role because this is such a big experience in your life, a big time. What role did nutrition and what kind of nutrition helped you heal? Well, see, 8 years later, something happened to me in January 2024. This year. Yeah. I started working on my trauma healing, my emotional and my mental health 2-3 years ago. Right. Many different things happened. बहुत कुछ हुआ. मतलब the worst. Maybe not the worst. I mean, of course, I'm blessed कि मुझे life-threatening diseases नहीं हुए. But many things happened to me. तो बहुत सारा trauma इकट्ठा हो गया. And I realized कि अब ज़रूरी है कि it's time to take a look at what's happening inside. Would you share, like, give us a glimpse of what kind of trauma? Because I'm sure women are going through them as well. You know, Aamna, I was sexually harassed very early on in my career. In fact, the first time I was molested, I was 3 years old. I've spoken about this. 3 साल की थी और एक neighbor के कोई cook था या cook का बेटा था, teenager था या कुछ young ही था but बहुत बड़ा ही था मुझसे. That was the first instance. Then many other instances. Then harassment in college, on the streets. Thi, catcalling, किसी ने हाथ लगा दिया, which we take very lightly, but that was all a part of trauma build up. Trauma build up, financial stress, pressures. You know, I was a very high functioning and I wanted to perform. I wanted to be the best. I wanted to just make everyone happy. तो वो भी stress में लेती थी अपने ऊपर. Then I also wanted to push the boundaries. Always. College से ही मैं एक unconventional student थी. मेरा thesis भी बहुत controversial था. And my mother was like, मैं जितनी डरी हुई हूँ, मैं जितनी प्रोटेक्टिव और शेल्टर्ड हूँ, ये मैंने एक ऐसी बेटी पैदा कर दी है who wants to be independent and not conform. So I wanted to do everything. Then when I moved to Karachi after college, I was sexually harassed in my first job for many years. And then I was in a physically abusive relationship also in my 20s. और वो भी बहुत लंबी relationship थी. हमारी मंगनी 2-3 दफ़ा होते होते नहीं हुई because I mean I would stop. I would not go ahead with it. So it was a physically abusive relationship, not just an emotionally and verbally abusive. I was in and out of that for 6-7 years. Then after that, there was another very abusive
emotionally abusive relationship that I was in. I was mugged twice. Somebody broke into my house. So ये बहुत सारी चीजें हुई. Lots of trauma. Lots of things happened. And then finally, I was in another relationship, and that finished, and I decided that I just want to be on my own. Yeah. Although at that time I could have gotten married. I had the opportunity to be married, but मैंने कहा कि मुझे अपने आप को पहले heal करना है. I can't go into a partnership, into a relationship without healing all these traumas. Yeah. I don't want to dump all my accumulated traumas on my partner and my kids. And because I saw that my mother had a lot of trauma in her. And I wish that people had the opportunity to heal their traumas before they become parents. Yeah. So I decided, मुझे बच्चों से बहुत, like, I love kids, but I was scared of having children. Right. So I was like, I'm scared. How am I going to raise them when I have so many fears myself? So then I started working on my emotional state. And many, many things I did. You know, I started practicing this manifestation technique. मैंने meditate करना शुरू किया. I started connecting with my creator a lot more. मैंने spiritually, and I don't speak about these things much, but I would like to mention here that इस्लाम में जो चीज़ें, जो way of life बताया गया है कुरान में, it is so on point. Now the entire Western world is moving towards that. Absolutely. Fasting. Yeah. You know, namaz is a combination of meditation, of movements जो आपकी yoga practices में होती हैं. अच्छा, मेरी अम्मी ने मुझे तिब्बे नबवी पे बड़ा किया. So, and you know, I speak about it in interviews, and लोग कहते हैं कि अच्छा तिब्बे नबवी तो follow किया, तो बाकी आपकी जो हरकतें हैं, तो you know, the way you dress or the way you are, I mean, people question. Yeah. And I am like, I am learning. I am becoming, absolutely. You know, I'm trying to be better every year, every day, every hour. Yeah. I'm working on myself. बहुत सारी गलतियाँ की, बहुत सारी, you know, गलत रास्तों पे गए जो आपकी health के लिए भी बुरे होते हैं, आपकी mental, physical health के लिए. So I'm trying to change all that. Yeah. And just many things I started doing. So then I decided कि भाई अब emotional healing हो रही है तो ये physical healing भी तो हो जाए. Yeah. तो अब surgery का time आ गया है. Right. And I went to Dr. Shah after 8 years. Dr. Shah ने कहा क्या पहले? I would like to know कि what did Dr. Shah say? कि Dr. Shah के जो बड़े भाई हैं Dr. Junaid Shah, वो भी एक orthopedic surgeon है. ये पूरा खानदान orthopedic surgeons का है. तो you remember कि एक Turkish show, Turkish Pakistani collaboration हो रही है सलाउद्दीन अय्यूबी के नाम से. Of course. So Dr. Junaid Shah is one of the executive producers. Okay. तो हम सब गए उसकी launch ceremony के लिए इस्तांबुल 2 years ago. Yeah. Dr. Shah was there. ठीक है. Dr. Imran Shah भी थे, Dr. Junaid Shah भी थे. तो Dr. Shah मुझे मिले 6 years later. हाँ भाई हड्डी जुड़ गई. I was like नहीं अभी भी नहीं जुड़ी. So I was like अच्छा अब जब ये सीरीज बनेगी तो इस पे तो घोड़े चलाने होंगे और बड़ी फिजिकल एक्टिविटी होगी. तो मैं तो अपनी टूटी हुई हड्डी के साथ ये सब नहीं कर सकूंगी. तो डॉक्टर शाह ने कहा, जुनैद शाह ने कहा कि डोंट वरी, जब शूट से पहले हम तुम्हारी हड्डी जोड़ देंगे. अच्छा. सो ये बात हो गई. 2 years later I just decided finally. I went to Dr. Shah. This year. हाँ. खैर in January I was like, Dr. Shah आप बताएं करना है नहीं करना है. मुझे घोड़ा चलाना है सलाउद्दीन अय्यूबी के सेट पे. नहीं मैंने अब वो भी नहीं था. I was like वो पता नहीं कब बनेगा, वो तो डिले होता जा रहा है. बट मैं तो अब मुझे शादी करनी है. You know, now I'm ready to be a mother. Okay, so this is in January 2024. Ayesha Omar अपने आप कह रही है मुझे शादी करनी है. Now I'm ready to be a mother. Okay. And I want to heal myself completely. You know, बच्चे को तो गोद में भी तो उठाना होगा, तो कैसे उठाऊंगी? So I was like, no, I will do this before I get married. So I got the surgery done in March. It was very complicated. And it really taught me a lot.
नहीं, but हम जानना ये चाहते हैं because ये episode आज का is the art of eating and healing. So how did your healthy lifestyle or the kinds of foods that you were eating before the surgery, after the surgery, through life, through your 30s, how has that helped you become stronger? Everything. Like, and what kinds of foods? I mean, let's get into that. Let's get into the kinds of foods. You gave up sodas and you gave up junk food. So I've never seen you eating chips and chocolates and all of those guilty pleasures. I eat cacao, chocolates every day. Cacao ko to hum chocolate samajhte hi nahi hai na. I eat raw cacao. I mean, I drink raw cacao every morning. Hot chocolate cacao. Yeah, cacao is, I think, the raw material of chocolate. Very bitter? I love it. You love it. It is bitter. It is bitter. You can sweeten it with dates, monk fruit, maple syrup, honey. Okay. Hot sweeteners hai. So, yeah, I think about 11, 12 years ago, that's when my physical transformation happened. Yeah. और एकदम से मैं 6 महीने में एक गुपलू खूबसूरत बुलबुले में एक खूबसूरत थी जो गुपलू थी, and within 6 months I became really petite and slender. Yeah. So people thought it was sudden, but 6 months I think का time था. So I gave up refined sugar. Right. I cut down on gluten and dairy. And then I finally, over the years, gave it all up. Right. Of course, मजबूरी में कभी खा लेते हैं. That day I had a brown bread sandwich. But I gave up gluten, dairy and sugar. So big white sugar thought. And processed foods. And you'll tell me, is this a misconception that a lot of our calcium comes from dairy? So when you give up dairy, do you like lose out? क्योंकि हमें बचपन में कहा जाता है दूध का ग्लास पी लो, ये इसकी हड्डियां मजबूत होंगी. हाय देखिए आमना, मैं चूंकि मेरे पास एक डिग्री नहीं है न्यूट्रिशन में, तो मैं ऑफ कोर्स बहुत लोग तनकीद करेंगे कि आप कौन होती हैं कहने वाली या एडवाइस देने वाली. तो मैं एक डिस्क्लेमर दे रही हूँ कि जो भी मैं बात कर रही हूँ मैं अपने बारे में कह रही हूँ कि मैंने ये किया, मेरे ये डिसीजंस थे अपने जिस्म के लिए, और मैं किसी और को ये नहीं एडवाइस दे रही अभी. जब इंशाल्लाह मेरी डिग्री होगी न्यूट्रिशन की जो होगी अनकरीब, तो तब मैं फिर आप लोगों को एडवाइस दूंगी. बट आई हैव डन years and years of research. अच्छा, डेयरी का ये है कि देखें, द फर्स्ट आई वुड से न्यूट्रिशियस सब्सटेंस दैट अ चाइल्ड ईट्स इज मिल्क, ड्रिंक्स, माँ का दूध. सो उससे बेहतर तो चीज़ ही नहीं है ना. आई डोंट consume too much dairy because dairy causes inflammation in a lot of people. Right. और बहुत सारे लोग lactose intolerant होते हैं. Absolutely. Dairy itself अगर grass fed cows से आ रही हो और hormone free animals से दूध आ रहा हो और उनकी ग़िज़ा बहुत साफ हो, बहुत खुश जानवर हो जो मेडोज में ग्रेस कर रहे हो, अच्छी फिजा में मीठी घास खा रहे हो, उनको कोई स्ट्रेस ना हो, और वो हरी हरी घास खा रहे हो, तो उनका बहुत अच्छा दूध होगा, उनका दूध अच्छा होगा. और उस दूध की दही भी बहुत अच्छी होगी, उस दूध का चीज भी बहुत अच्छा होगा, उस दूध का देसी घी भी बहुत अच्छा होगा. लेकिन चूंकि ऐसा दूध अब नहीं ज्यादा अवेलेबल, जिन लोगों को अवेलेबल है वो पीते हैं. तो मेरी बॉडी में कर रही थी और मुझे बहुत ज़्यादा ग्रोइंग अप एक्ने भी थी, इसीलिए क्योंकि मेरे ऑयल ग्लैंड्स बहुत एक्टिव थे और डेयरी की वजह से वो और एक्टिव होते थे. अच्छा, देन आई ऑल्सो डेवलप पॉलीसिस्टिक ओवरीज एंड उसके भी कॉजेज डाइटरी हैं, जेनेटिक्स तो हैं, but 10% of what happens in your body is genetic. But I'm asking that where are you getting your calcium and your vitamins? So calcium, of course, external आप supplements भी ले सकते हैं. After my surgery, my doctor said कि आप बस लगातार calcium, vitamin C और D3 की supplementation करें. और मैंने की, and मैंने बहुत ज़्यादा CaC-1000 पी है. मैंने बहुत बोतलें CaC-1000 की खत्म की है. So yeah, I did it. Bone strength is important, right? And boils down to, as women age, they do lose bone density. Bone is your structure. Bone is your structure. It's your movement. It's your functionality. All of bone and muscle. So I think building the bone and the muscle is so important. Especially after 50. Yeah. After 55 तो आपकी muscle tone decline कर रही होती है. You know, muscle कम हो रहा होता है. मुझे लगता है पहले ही हो रही होती है वैसे. हाँ, but naturally आपका muscle होता है. But when you're older, after 60 तो बहुत ज़्यादा
muscle tone Yeah, so नीचे Ayesha, जाती है. you're in your 40s. You stepped into your 40s now. Yeah. And do you feel that body किसी तरीके से age कर रही है, or Of are you managing it course. proper? Or are you feeling I mean, better you know, now? Well, You're looking मेरी, as good as you did 10 years ago. So the thing is that, do you feel like internally in well, any I'm way? still in a lot of pain because मेरी healing अभी But नहीं that's the हुई. accident, right? No, that's a surgery. That's surgery. Surgery. Right. So I had 2 surgeries. मेरी एक surgery March में हुई, and I developed a complication, and 1 महीने बाद मेरी फिर से surgery हुई in April. Yeah, Not is- many people know that about is devastating. Yeah. It was so traumatic because I went back to ground zero, बल्कि minus. And वो complication हुई because of another. Now, I don't know ये episode कब चलेगी, but it was because of a physiotherapist who came in and उनकी negligence. And it's another story. One day I will speak about that. But खैर फिर से surgery हुई. And I had to start from minus because 1 महीना मैं गुजार चुकी थी static. So my muscles had kind of frozen. So I had anesthesia all over again. I had 2 anesthesias within 3 weeks. And you have to have a gap of 6 months before big anesthesia. Yeah. So And it's a big surgery. Yeah, 2 big reconstructive surgeries. Bone grafting हुई है, right? जी, मेरी pelvic bone से bone निकाली, slice करके, काट के. Pelvic bone को slice किया, अंदर से bone marrow निकाला, bone graft निकाला. यहाँ पे मेरी bones को drill किया, मसल को काटा, टिश्यू को काटा, बोन्स को ड्रिल किया, अंदर से ब्लड और मैरो ढूंढा, बोन ग्राफ्ट लगा, फिर टाइटेनियम प्लेट लगी. एंड देन आई हैड द सेम सर्जरी ऑल ओवर अगेन. सो 2 सर्जरीज दे वेंट बैक इनटू माय पेल्विक बोन. अब सेम जगह से तो ग्राफ्ट नहीं निकाल सकते थे, सो पीछे से निकाला. सेकेंड सर्जरी में मेरा नर्व डैमेज हुआ बिकॉज वहां से नर्व्स गुजर रही थी. So there was a lot that I went through. That is a lot to deal with. Yeah. And my doctor, after 2 weeks, I was in so much pain. Second surgery में, और पहली surgery के बाद मुझे वो sensations नहीं feel हुई थी जो second surgery के बाद हो रही थी. So I was like, Dr. Shah, what is happening? What is happening? Yeah. मुझे लग रहा है कि मेरा कोई flesh चीर रहा है अभी भी. And he's like, Ayesha, I have to tell you something. I said, what? He's like, I didn't tell you before because I didn't want to stress you out. But during the second surgery, I had to cut through nerves and put them on the side. So, वो पहली surgery में नहीं था. So there was damage, and you will feel this. I was like, will it? मतलब मेरी movement effect होगी बाद में. He said नहीं, motor movements में फर्क नहीं आएगा, but obviously numbness रहेगी. सेंसेशंस रहेंगी, बहुत सारी चीज़ें फील होंगी, ओवर टाइम शायद कम हो जाए, पता नहीं. बिकॉज माई केस वॉज यूनिक. ही इज़ लाइक, इन द हिस्ट्री ऑफ माई करियर आई हैव नॉट ऑपरेटेड ऑन अ पेशेंट लाइक यू, जिसकी रिविजन सर्जरी हो रही है 8 साल बाद और फिर 2 सर्जरीज हों. So my case went to, the British Medical Association, and they studied it, and it was, well, he did it, and hats off to him. He did it, but me and him worked together. There were a lot of things जो वो डरते थे कि ये नहीं करना तुमने. And I wish I had done it. Not that I wanted to go against his word. But like, for example, जब मेरी surgery हुई, my brother said कि अपने जो incision है, and it was massive. I mean, I can show you this. I mean, he's done a good job. इतना कोई scar नहीं है वैसे. Healing very well. Yeah, but एक ही जगह से 2 दफा कटा. है. Same incision. And then, I was scared कि keloids develop ना हो जाए. So I took a lot of vitamin C. I used to put a lot of turmeric. I used to eat a lot of turmeric for inflammation and pain. It does. Okay. So my brother said कि आप अपनी जो scars हैं, मतलब जो incisions हैं, उसमें हल्दी, turmeric लगाओ with honey. Put it on it, the fresh wound. And would you recommend that? My doctor said no. I don't want to risk it. Please don't do this. अच्छा, तो हमने क्या किया? Infection होने का डर या कोई ऐसी चीज? नहीं, he said भाई मुझे नहीं पता क्योंकि I've never tried this and I'm going to tell you what my practice tells me. Now my brother is a holistic healer
एंड लेट मी टेल यू दैट 5 साल पहले मेरी एक और बहुत बड़ी इंजरी हुई थी एट वर्क इन अ स्टूडियो वेयर आई फेल इनटू अ मैनहोल, नेवर स्पोक अबाउट इट, एंड आई गॉट मैनी स्टिचेस इन माई इनर थाई. और उन स्टिचेस पे आई यूज्ड टू पुट टर्मरिक एंड कोकोनट ऑयल का मिक्सचर. Okay. आफ्टर द फर्स्ट डे ओनली, जब तक वो स्टिचेस निकले नहीं हम लगाते रहते थे. एंड बिलीव मी दैट स्कार हैज हील्ड सो वेल का उसका निशान ही नहीं है. माइन्यूट निशान है. I mean, you're not using coconut oil or anything on your shoulder. I am massaging different Right, oils like right. castor oil for scar healing. Shea butter मैंने use किया, मैंने sea buckthorn oil use किया. I made an ointment myself. You know, I ate a lot of vitamin C. बहुत चीज़ें मैंने, बोन ब्रॉथ पिया. अम्मी आ गई रहने तो she would make me यखनी every day, beef bones की. Yeah. Which is another debate कि फिर वीगन डाइट पे जो होते हैं वो क्या करें, कोलेस्ट्रॉल भी हाई हो जाता है, वो भी होता है. सो आई वाज लाइक अम्मी मुझे नहीं खाना रोज गोश्त, ये रोज लड़ाई होती थी. अभी बड़े मजे का है ना आयशा, एज लॉन्ग एज आई हैव नोन हर ना, एक हमेशा आयशा के पास एक बैग होता है. हाँ. उसके अंदर से ना चीजें निकल रही होती हैं. पहली दफा मैं जब मिली तो आई थिंक दे वर गोजी बेरीज एंड पता नहीं कौन कौन सी ड्राई बेरीज, उनका एनर्जी. और फिर दैट्स वन थिंग आई एक्चुअली लर्न फ्रॉम यू, दैट ऑलवेज हैव समथिंग ऑन हैंड so that you're not like making a beeline for the first unhealthy thing that you see around you. तो अब मैं भुने हुए चने रखती हूँ. तो it's like goji berries रखो, ये वो. Carry your snacks. हाँ, carry your snack. अभी भी आयशा आई तो she had a little bottle full of powder. निकाला, मैंने कहा ये क्या है, कि यखनी, मैंने कहा powder form. निकाला और घोला. इस लाइफस्टाइल के साथ हर वक्त यखनी तो मिल नहीं सकती. नहीं. तो फिर मैं ढूंढती हूँ कि यू नो ऑर्गेनिक ऐसी पाउडर्ड फॉर्म में चीजें हों जो आप मिला के पी लें. एब्सोल्युटली. तो हमारा घंटे का सेशन है तो मेरे पास पानी है और मैंने आपको भी CAC दिया. I am so proud of and you got your yakhni in your thing. And it's like my own salt also. You got your own salt. I carry my sea salt and my Himalayan salt in my car now. मुझे table salt नहीं डालना. By the way, salt is another thing that killer. It's so good for bone health. अच्छा, it's good for मैंने कहा killer. Okay. No. Okay. Table salt is a killer. Right. But sea salt and Himalayan salt. But they don't have iodine. हाँ? Do they? तो वो तो आइसोलेटेड फॉर्म में आयोडीन है. राइट. बट जो इतने सारे मिनरल्स आपको चाहिए, जो हिमालयन सॉल्ट पहाड़ों से मिलते हैं आपको और सी से मिलते हैं, समंदर से मिलते हैं मिनरल्स, वो सारे मिनरल्स सॉल्ट में होते हैं अगर वो अच्छी क्वालिटी का हो, जो आपको बोन हीलिंग के लिए चाहिए. Achha, now tell me, take me through an average day of eating in Ayesha Omar's life. Well, eating after the surgery? Yeah, nowadays. So जब मेरी सर्जरी हुई तो of course मैंने बहुत रिसर्च की. शुरू के 1-2 हफ्ते तो बिल्कुल ही मैं ट्रॉमा में थी और मैंने पहले से इतनी रिसर्च नहीं की हुई थी. I knew stuff, but I didn't know कि immediately surgery के बाद क्या करना चाहिए. Because मेरी फिल्म टक्साली गेट रिलीज हुई थी. Do you remember हमने एक पॉडकास्ट की थी? I think टक्साली गेट के रिलीज होने से 2 हफ्ते पहले. हाँ, लिटरली फिल्म रिलीज के 1 हफ्ते बाद मेरी सर्जरी हो गई. So I didn't have time to prepare for the surgery. You know, बस one fine morning मुझे fasting state में हॉस्पिटल जाना था और शाम में मेरी सर्जरी हो गई. Then I was there for 4 days. फिर पूरा प्रोसेस शुरू हुआ. So मैंने कहा oh my God, अब मैं 6 महीने तो जिम तो जा नहीं सकूंगी. सबसे बड़ा तो मुझे ये था कि now I am going to balloon up. And you know then पूरा प्रोसेस फिर से शुरू होगा. So I better control my carbs, my diet. So I was eating a little less, but then I researched and बहुत पॉडकास्ट देखी तो पता चला, मतलब दिस इज ट्रू, कि बोन हीलिंग के लिए आपको ज़्यादा कैलोरीज चाहिए. 600 कैलोरीज तो आपकी बोन हीलिंग में जा रही हैं आफ्टर सर्जरी और अ फ्रैक्चर. सो जिनका फ्रैक्चर हो रहा है या हड्डी टूट रही है, फ्रैक्चर इज हड्डी टूट रहा है या सर्जरी हो रही है बोन सर्जरी, उनकी डाइट में से 600 कैलोरीज जा रही हैं बोन हीलिंग में. और बाकी आपको आपकी नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए कैलोरीज चाहिए.
So I was like, oh, I must eat more than usual. Right. So I was eating more than usual. Okay. 3 meals करने की कोशिश करती थी, फिर एंटीबायोटिक्स भी ले रहे हैं, फिर करोड़ किस्म की और दवाइयाँ हैं, उनके साथ मील्स खाने हैं सारे, वरना एसिडिटी हो जाएगी. फास्टिंग स्टेट में तो मैं मेडिकेशन ले नहीं सकती थी. So I was eating a lot of eggs and spinach and kaleji and बहुत मैंने red meat, मतलब कीमा कंज्यूम किया, देसी मुर्गी. Your bone broth. हाँ, उस वक्त it was not very hot, मार्च था. So bone broth मैं every alternate day पी रही थी. I mean, my mother wanted कि मैं दिन में 2 दफ़ा पीऊँ, लेकिन मैं नहीं पी रही थी. And I wish पिया होता. But खैर, so यखनी पी रही थी. I was having vegetables, कभी कभार fish खा ली, prawns खा लिए, rice, gluten free bread, so बाजरे की रोटी. So मैं ये सब कुछ खा रही थी. Then I was having supplements, बहुत vitamins भी खा रही थी, आहिस्ता आहिस्ता. But the great thing was कि काम पे नहीं जाना था ना. Other than your CaC, what else were you like? Many. Really? Many. And are you still taking those supplements? No, मैं अदल बदल करती रहती हूँ. I take a lot of mushroom extracts. So I am known as the mushroom fairy. Because I eat a lot of mushrooms. This sounds really strange. I love mushrooms. Yeah, mushroom fairy sounds. And mushrooms are, I love it. Some of the most nutritious foods on earth. पता ना आजकल कई किस्म के mushrooms होते हैं. हाँ, बिल्कुल पता है. लेकिन मैं healthy वाले locally made Pakistani grown mushrooms बहुत खाती हूँ. There are a couple of stores जो रखते हैं local mushrooms, button mushrooms. शिटाकी तो हमें नहीं मिलते यहाँ पे. ड्राई मिल जाते हैं. हाँ, ड्राई मिलते हैं. सो फिर मैं जब बाहर ट्रैवल करती हूँ या कोई आ रहा होता है, तो इंस्टेड कि मैं बहुत सारा मेकअप मंगवाऊँ या मैं और चीज़ें मंगवाऊँ, मैं अपने सप्लीमेंट्स मंगवाती हूँ. द बेस्ट प्रेजेंट टू गिव मी इज़ कि आप मुझसे पूछें कि आयशा तुम्हें क्या चाहिए, कौन से वाइटामिन्स और सप्लीमेंट्स चाहिए और कहाँ से चाहिए, और कौन से मशरूम्स चाहिए और कौन से मशरूम सप्लीमेंट्स चाहिए. सो आई स्टार्टेड हैविंग अ लॉट ऑफ रेशी, लायंस मेन. अच्छा, लायंस मेन एक ऐसी मशरूम की वैरायटी है, कभी इनके नाम ही नहीं सुने. अब आप जाके सुनिए. ठीक है. तो नर्व और ब्रेन रीजनरेशन के लिए, ब्रेन फंक्शन के लिए लायंस मेन मशरूम इज नोन एज जस्ट अ मिरेकल मशरूम. ओके. सो आई स्टार्टेड टेकिंग दैट फॉर, क्योंकि एनेस्थीसिया के बाद आपका कॉग्निटिव फंक्शन अफेक्ट होता है, आपका ब्रेन, मेमोरी, एवरीथिंग. एंड आई फेल्ट दैट. आमना, मेरी मेमोरी अभी तक ठीक नहीं हुई. बहुत सारी चीज़ें मुझे नहीं याद आती जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है. एंड इट्स नॉट लाइक I miss those things. It doesn't worry me because I know that with the right diet I'll get back to that. In fact, if anything, it's great because कोई कहता है आपको वो याद है, मैं कहती हूँ नहीं याद, और कुछ नहीं होता अगर नहीं याद. I would say welcome to midlife, but at some point वैसी चीजें याद नहीं रहती, but you're not there yet. That was the first 2-3 months after the 2 surgeries. Anesthesia is huge. We take it lightly. That is another discussion altogether. I've been under 4 anesthesias in my life. So anyways, तो फिर मैंने लायंस मेन मशरूम खाना शुरू किया. Cordyceps for energy, shiitake, turkey tail for my gut, probiotic supplements. ये सब मशरूम्स हैं? नहीं, probiotic supplements मैंने लिए because मेरे 2 courses of antibiotics हुए थे 2 हफ्तों के लिए. And my doctor, because he was scared कि infection ना हो, क्योंकि एक फॉरेन ऑब्जेक्ट अब डाला है, टाइटेनियम प्लेट, और फिर वो 2 दफ़ा डली. So he gave me 2 different generations of antibiotics, both types. And I was like, मुझे नहीं खानी. But he's like, नहीं, we have to be safe. So I was on antibiotics for 15 days and then 15 days again. And then that really affects your gut bacteria. हमारी गेम ही सारी gut microbiome की है ना, body की. So everything starts from your gut. Absolutely. We've heard that. अगर आपका gut सही है, अगर आपके gut का बैक्टीरिया सही है, और सही का मतलब है कि डाइवर्सिटी होनी चाहिए, और बैक्टीरिया होना चाहिए gut में बहुत ज़्यादा, बिलियंस की तादाद में होना चाहिए. Have you heard of this? I know that बैक्टीरिया होना चाहिए कोलन में. और but when you buy probiotic supplements, तो उन पे लिखा होता है billions of
Have you ever I've read never that? had a probiotic supplement. Never? Okay. You don't need to. You can have fermented foods. Okay. आप खाती हैं? Like nahi? Like sauerkraut? No. Like kimchi? No. What do you do? Yogurt? Yogurt has probiotics. Great probiotics. Greek yogurt? हाँ. Yeah, Greek yogurt, yeah. अच्छा मैंने Bananas? बनानास के प्रोबायोटिक्स कम होते हैं हाँ होते हैं Right. but yogurt is great. Yogurt, yeah. अच्छा I started having a lot of sauerkraut which is fermented cabbage. Yeah. तो मैं हर मील के साथ नहीं दिन के एक मील के साथ खाती थी kimchi which is a Korean thing. Yeah, that's also fermented. Yeah. Pickles जो हमारे हैं पाकिस्तान में अचार fermented होता है, so that has probiotics also. Fermented foods. So I started having probiotic supplements and building up my gut bacteria. Yeah. वो किया and slowly my doctor was like, oh your scars are healing well. He's like, what are you doing? So I was like secretly अच्छा एक मेरा बहुत बड़ा स्कार इधर है तो मैं इस वाले स्कार पे टर्मरिक ऑयल कोकोनट ऑयल लगा रही थी इस पे एक्सपेरिमेंट करो हाँ तो मैंने कहा कि ये डेंजरस एरिया है ये थोड़ा कम है तो पहली सर्जरी के बाद जो जहाँ मैंने टर्मरिक और कोकोनट ऑयल लगाया आई एम नॉट किडिंग उसका स्कार लिटरली डिसअपियर हो चुका है बट सेकेंड सर्जरी के बाद मैंने नहीं लगाया बिकॉज आई हैड अ लॉट ऑफ फियर एंड ट्रॉमा कि ओ माय गॉड मैं कुछ गलत ना कर दूं क्योंकि मुझे लगा कि मैंने कुछ गलत किया है कि ये कॉम्प्लिकेशन हो गई थी जबकि वो मैं सब सही कर रही थी इनफैक्ट जब एक्सरे हुए he was like your bones had started healing and joining. Whatever you were doing was great. So I was like अच्छा फिर से यही करते हैं. So yeah, I started. I still kept my gluten down. I think I've listed a lot of things. No, that's a lot of things, and I also wanted. I mean, that's a great message to give out. That considering the kind of trauma that you have been through, whether it's physical or emotional or mental or any kinds of trauma, look how well you have managed to heal yourself. And and it's an ongoing struggle always. I mean, yeah, I'm really grateful my mother was there. Yeah. और वो बहुत हमारी कॉन्फ्लिक्ट होता था क्योंकि वो मुझे फोर्स फीड करना चाहती थी चीज़ें और मैं कहती थी अम्मी अभी मैंने ये खाना है कुछ मुझे भी मेरी भी कुछ नॉलेज है आप अपनी अपब्रिंगिंग पे भरोसा करें अपने बच्ची को सही पाला है थोड़ा सा उसको भी कुछ पता है तो आई हैड अ लॉट ऑफ बनानास रोज के मैं 2 केले खाती थी अभी भी खाती हूँ a lot of chicus oh my god chicus are great for bones great cacao मैंने बहुत पिया good thing we live in Karachi city of chicus दिन के 3-4 खजूर अभी भी खाती हूँ of course so a lot of nuts a lot of oil like avocados जब भी खा सकी olive oil बहुत पिया I carried a bottle of extra virgin olive oil a bottle of castor oil a packet of khajurs and nuts जब आप एनेस्थीसिया से निकलते हैं तो आप कुछ खा नहीं सकते थोड़ी देर और आपसे वो पूछते हैं पहली चीज क्या खानी है क्या मूड हो रहा है अब आप डिलीरियस हैं और आप अपने किसी उसमें हाई स्टेट में हैं और आपका दिल चाहता है मैं ये खाना है द फर्स्ट थिंग both times after both surgeries I said मुझे खजूर चाहिए ठीक है literally breaking a fast because it was a 12-14 hour fast and ideally अगर आप 24 hours मैंने बाद में पॉडकास्ट देखी कि अगर आप 24 hours या 48 hours तक फास्टिंग में रहें तो आपकी इन्फ्लेमेशन बहुत कम हो जाती है राइट बट खैर आई वांटेड टू ईट इमीडिएटली मुझे उसका कुछ पता नहीं था मैंने कहा भाई मुझे खजूर दे दे तो वो मेरे पड़े हुए थे बेड साइड पे खजूर खाए बट इवन बिफोर दैट आई टुक अ बिग गल्प ऑफ extra virgin olive oil. What? Instinctively. Okay. So when they wheeled me back to my room and I'm waking up, I was waking up in the operation theater and they had put me on a vent both times. Yeah. तो वेंटिलेटर पे डाला हुआ था तो उससे आपका थ्रोट बिल्कुल रॉ हो जाता है सोर हो जाता है तो now I could feel it I can't swallow
And first time I'm like, oh my god, मुझे तो गले में तो कुछ swallow ही नहीं हो रहा. And then कुछ नहीं होता, एक दो sips पानी की मिली. A few hours later, I was like, please मुझे extra virgin olive oil दे दे. अच्छा मेरी bedside पे extra virgin olive oil था और होंठ भी बहुत dry हो रहे थे. So I drank some olive oil and licked it on my lips. And then I also put some castor oil on my lips. Within 2 days, my throat was perfect. Yeah. Because I drank extra virgin olive oil 3 times a day. Yeah. मैं उठती थी, मैं olive oil पीती थी, मैं लेटी रहती थी. I couldn't move. I remember I was on my hospital bed. Arm obviously is completely static. Sara operated on. So there was a table that I'd placed here. All I could do was move this hand. Okay? Oh. Yeah. So मैं इस हाथ से olive oil पीती थी. And I couldn't even go to the bathroom myself. No, can I just say that olive oil also must be doing wonders for post-surgery constipation, because that's also a fear. Yes. Yeah, I mean. मेरा जो pelvic bone की जो incision थी, उसकी वजह से मैं चल नहीं सकती. Yeah. So अब मैं बिस्तर से उठी हूँ and I'm like, oh my god, I can't walk. Yeah. I could not go to the bathroom. I could not put pressure on my pelvic area. Yeah. So I could not urinate without screaming in pain. We're talking about how fabulous your dealing with traumas has been. And I think that is so inspiring, because I know that a lot of us go through so much, and at that time you think you're the only one. And you think that कोई और नहीं इस चीज से गुजरा, और जो मैं गुजर रही हूँ मुझे कितनी तकलीफ है और मेरे साथ क्यों है. आमना, वो टाइम आया था. लेकिन जो इस तकलीफ दे टाइम से जो मैंने सीखा, I spent a lot of time alone. And that was a struggle, because my mother wanted to constantly be on my head also. And I was like, कुछ घंटे मुझे अकेले ही चाहिए होते हैं, मुझसे कोई बात ना करे. फिर जब मैं चलना थोड़ा थोड़ा शुरू हुई, तो the first time that I went downstairs for a walk slowly, initially my mother used to go with me, slow walks के लिए. जो उस टाइम में मैंने पेन और उस सब से सीखा, I think I'm a completely different person today than I was in January. There's so much more gratitude. Absolutely. And I see that. Haan. I have one last question for you. You've spoken a lot about your mother, and you've spoken a lot about motherhood, and about building core strength, and about being at your fittest and your healthiest through your life, and through your 20s and through your 30s. For a lot of women, 30s, and I don't know if you've spoken about this, and even if you want to, 30s, they feel that, okay, biological clock is ticking. Of course. Of course. Now, I see you as an epitome of good health and strength, core strength. Do you see motherhood on the cards in your 40s? You do? I know someone who conceived at 51. I know that person. And what enables a woman to be that healthy in your 40s, to be able to? Because a lot of women will be asking this question. And सबसे पहले तो motherhood कोई conceive कर सके नहीं कर सके, that is all up to your creator. We don't know कि आप क्या निज़ाम है अंदर, ये तो अल्लाह की तरफ से है. We all agree to that, we understand that, we know it. Now, आपकी body की जो environment है, that plays a big part. How fertile you are, what you're eating, आपकी hormones किस तरह चल रहे हैं, balanced हैं, नहीं हैं. Game ही सारी hormones की, reproductive hormones. And reproductive hormones are also regulated by your diet. So a lot of fertility issues, and this is not me saying it. I started doing a lot of research on it. I follow someone called Barbara O'Neill. Okay, she's a doctor, a health practitioner, Dr. Eric Berg. और इनकी मैं पॉडकास्ट देखती हूँ. एंड्रू ह्यूबरमैन, खैर वो तो न्यूरोसाइंटिस्ट हैं. एंड दे ऑल स्पीक अबाउट हाउ योर डाइट अफेक्ट्स योर हार्मोन्स, स्पेशली रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑल्सो. और इनफर्टिलिटी की बहुत सारे इशूज जो हैं आर कनेक्टेड टू द डाइट you've had all your life. Of course, genetic चीज़ें भी हैं. So I am positive and confident that, if I become even more healthy with my lifestyle and diet, inshallah, so I would want to be a mother in the next
coming few years. And I hope I can be. I Yeah. pray, inshallah, agar Allah ne chaha. And I think that actually I know quite a few women who've conceived in their 40s. So are we seeing Eminem on the cards? What is Eminem? Marriage and motherhood. I was like, who's Eminem? Who's Eminem? Yeah. Which one are we talking about? Eminem, like marriage and Who's motherhood. this guy? Are you introducing I'd me like to to him? meet him, yeah. I mean, I want that, of course, Yeah. inshallah. Let's see, hopefully. Absolutely. We will. I want to see Eminem on the card. Anna? हाँ. That's a new term now. We want to see Eminem on the Eminem, cards. Eminem. We want to see और Eminem. मेरी दुआ ये है और मेरी जो चाह है हाँ. वो तो ये है कि अगले साल के first half में I want to be married hopefully and then by the later stage of the year maybe conceive if all goes well, if it's in my destiny. Absolutely. और अगर नहीं तो I would love to adopt. Yeah. I'm very open to that. Fantastic. और मैंने सोचा भी है कि मुझे कहाँ try करना है to adopt. I mean, of course, I would love a child from any part of the world. Yeah. But सबसे पहले तो हम अपने ही मुल्क में ढूंढेंगे. बिल्कुल. लंबा process होता है. Yeah. But even if I conceive, I still want to adopt. Yeah. Yeah. I want to adopt 1 or 2 children anyway. Inshallah. Yeah. Nothing's stopping you. Inshallah. I hope so. I hope that is the इस काबिल takeaway. रहूं मैं That is the कि takeaway कर that सकूं. nothing should stop anybody from doing what they feel is right in their life. But I can't wait to go back to the gym. I can sense that. Yeah. It's been 5-6 For somebody months. so active, I can imagine how difficult it must have been. You'll get there. No, it wasn't difficult. I've taken my time. Yeah. मैं walk करती हूँ, मैं squats करती हूँ. आहिस्ता when I can start lifting, I will. Yeah. Aista. Inshallah. Aisha, thank you so much. Thank Pata hi you. nahi chala waqt ka. Fantastic conversation. And Thank again, the you. purpose is for women to take inspiration and to be inspired. And everything that I've said today in this podcast, मैं कोई भी चीज किसी और को एडवाइज नहीं कर रही. Yeah. मैं अपनी जो मैंने चीजें सीखी हैं with my research जो मैंने अपने ऊपर अपनाया मैंने वो शेयर किया. बिल्कुल. अब आप लोग अपनी research करें. Everything is available. And research also, there's a lot of misinformation on the internet as well. Yeah. I would like to be see. careful. And so sending you off, I have a little. हमने कहा हम कोई कम थोड़ी हैं किसी coffee with Karan से hamper के बगैर तो नहीं मिला. Of course. And there you go. Guess what? You get extra virgin I have some olive oil. Oh my God. Did I manifest this hamper? You did. Oh my God. I love this hamper. Well done, guys. You have done well. किसने बनाया ये hamper? ये हमारी एक बड़ी जबरदस्त team है and they've put together इतने smart लोग customized कौन हैं? hampers. और जो एक ये काम क्या है है? इसमें this is your CAC glass. Sachets. No, glass. Oh. This is your CAC glass. Ooh. This way you can have more mango CAC. Thank you so much for your time. And it was extremely generous of you to share so many details of your life and your future. And wish you the very best always. Thank you.